So hi everyone, we will start the new chapter, that is chapter number 4, moving charges and magnetism. Before it, in the electrostatics, we discuss about the charges at rest. Like electrostatics में हमने जितनी भी चीजें पढ़ी थी, they are related to the charges at rest, right? What is the force on a charge at rest placed in an electric field? What is the formula for that charge, beta? Formula for that force, F is equals to QE. Here in moving charges and magnetism, it is electrodynamics, in which we study the charges in motion, right? So let us start. First we have magnetic field. Just like in electrostatic, we have studied what is electric field. So what is electric field? The space or the field around a charge, source charge, in which electrostatic force can be experienced. That is electric field. If you talk about magnetic field, that means field or space, the field or space around a magnet or a current carrying conductor. Current carrying conductor. In which magnetic force can be experienced. Okay? In which magnetic force can be experienced is called magnetic field. Okay? If we have a current carrying conductor, current I is flowing through this wire, so it shows the magnetic behavior, magnetic effect of electric current. So electric current has three effects, which you studied. Which one? The heating effect, magnetic effect, and the chemical effect. Chemical effect ना Faraday laws of electrolysis करते हो ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इलेक्ट्रोलिसिस में केमिकल इफेक्ट यूज होता है, जिसमें से जैसे किसी एक कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो होता है, it shows chemical behavior, यानी कि it split into the ions. That is a chemical effect. Magnetic effect, that means what is magnetic effect? What is magnetic effect of electric current? Magnetic effect of electric current. I told you na, electric current has three effects, okay? Which are heating effect of electric current, you studied this heating effect of electric current in current electricity, Joule's law of heating. That is, when an electric current is passed through a wire or a conductor, it gets heated up. It produces heat energy. What is the formula for that heat energy? H is equals to I square R T. You studied now? Next, second effect is magnetic effect of electric current. Magnetic effect of electric current. So what is magnetic effect of electric current? When the current is passed through a wire, it creates magnetic field around it, it produces magnetic field around it, and it starts behaving as a magnet. This is magnetic effect of electric current, right? What is magnetic effect, beta? When an electric current is passed through a wire, it produces
magnetic field around it and behaves like a magnet. This is magnetic effect of electric current. So the electromagnets now, when electric current is passed through those electromagnets, they start behaving as a magnet. है ना? In electric bell you saw that ना, जैसे ही आप electric bell को press करते हो, वो press करने से क्या होता है? The electric current starts flowing through that wire. जहाँ पे electric bell होती है, there is a magnet, electromagnet होती है. What is electromagnet? An iron piece and copper wound on it, n number of turns. There is a hammer. As the electric current starts flowing through that electromagnet, वो magnet की तरह behave करेगी. It attracts that hammer. ठीक है, इस तरीके का होता है ना. ये वो gong हो गया. This is the hammer जो बार बार स्ट्राइक करेगा. यहाँ पे अंदर की साइड इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है. तो जैसे ही आप बटन प्रेस करते हो, स्विच प्रेस करते हो, इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू दैट इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगी? इस हैमर को अट्रैक्ट करेगी. It strike again and again and produces the sound, because sound is produced by the vibrating object. तो जैसे ही ये स्ट्राइक करेगा, वाइब्रेशन होगी और साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी. तो दिस इज हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज्ड. ठीक है. तो कब काम करती है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स? जैसे ही करंट पास होता है, they produce magnetic field around it and starts behaving as a magnet. So this is a magnetic effect of electric current, कि जब भी किसी वायर में से करंट पास होगा, it start behaving as a magnet. It produces magnetic field around it. And third effect is chemical effect of electric current. ठीक है. Chemical effect of the electric current. What is a chemical effect? When the electric current is passed through a conductor, it break that into ions. जैसे अगर पानी में से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करें, तो जो H2O था, it split into hydrogen and oxygen ions, है ना? HCl में से पास करोगे तो H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस. तो केमिकल आयंस में कन्वर्ट करना, दैट शोज द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. वी सी द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रोलिसिस. देखते हो ना केमिस्ट्री में. So come back. So this is the magnetic effect of electric current. So what is magnetic field? जैसे ही करंट पास होता है किसी वायर में से, किसी कंडक्टर में से, it start behaving as a magnet, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. What is magnetic field? वो फील्ड या वो स्पेस जहां पे मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस की जाती है. अगर और कोई कंडक्टर इसके पास लेकर आओगे, इट एक्सपीरियंसेस फोर्स. जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था, एक चार्ज है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी दूसरे टेस्ट चार्ज को लेकर आओगे, दे एक्सपीरियंसेस फोर्स, है ना? दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. बट इन केस ऑफ अ मूविंग चार्ज, it produces magnetic field around it. Understood? The SI unit of magnetic field is, the SI unit of magnetic field is Tesla. ठीक है. And CGS is, CGS unit बेटा Gauss. ठीक है. And 1 Tesla is equals to 10 raised to the power 4 Gauss. This is a relation. Understood now? So the current carrying conductor produces magnetic field around it in the form of concentric circles. Right? How you define 1 Tesla? By the force on the moving charge. The force on the moving charge is F is equals to QVB sin theta. From there we can define 1 Tesla. 1 coulomb of charge is moving with 1 velocity, 1 meter per second velocity, placed in that 1 Tesla magnetic field, then it produces 1 Newton force. ठीक है. So this is magnetic field. Magnetic effect of electric current. Who told firstly about the magnetic field? सबसे पहले किसने बताया था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में? ऑस्टिड. ठीक है. किसने बताया था बेटे? ऑस्टिड. ऑस्टिड साइंटिस्ट थे
they tell about, firstly, about the magnetic field. That magnetic field is produced around the magnetic field. So Oersted tells about the magnetic field, that if this is a wire connected with a battery, current starts flowing. If we connect a magnetic compass over here, ठीक है, so what he observes कि जैसे ही करंट कैरिंग वायर है उसके पास में मैग्नेटिक कंपास रखा, तो द कंपास नीडल स्टार्ट्स डिफ्लेक्टिंग. व्हाई द कंपास नीडल स्टार्ट्स डिफ्लेक्टिंग? Because it shows some magnetic field around that wire, है ना? What is magnetic field? In which force can be experienced? That field around a current carrying conductor. तो ये सबसे पहले किन्होंने बताया था? Christian Oersted से, hence Christian Oersted. He told that when a current carrying wire, when a magnetic compass is placed near it, it starts deflecting. How we can remember? With the snow rule, yes, snow law. If the current flow from south to north over the wire, the needle deflect towards the west. If the current flow from south to north in a current carrying conductor, where the compass needle deflects beta? Towards the west. ठीक है ना? इसको स्नो रूल या स्विमिंग रूल कहते हैं कि अगर करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ अगर करंट फ्लो कर रहा है इन द कंडक्टर थ्रू द वायर, देन वेयर द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स द वेस्ट. और अगर नॉर्थ टू साउथ जाएगा, नीचे की तरफ करंट जाएगा, देन इट डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द ईस्ट. इस तरीके से ही डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड, या ही फाउंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर. राइट? या तो हमारे पास मैग्नेट हो, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है. देखिए, दो मैग्नेट्स को लेकर आते हो जो सेम है, सिमिलर मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, दे रिपेल, दे हैव रिपल्शन बिटवीन देम. और जो अपोजिट होते हैं, दे हैव अट्रैक्शन बिटवीन देम. सो ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि दोनों मैग्नेट्स के अब अपने मैग्नेटिक फील्ड है, एंड व्हेन दे कम क्लोजर टू ईच अदर, दे एक्सर्टेड फोर्स ओवर ईच अदर. एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं. सो मैग्नेटिक फील्ड वो स्पेस या वो फील्ड है जहां पे फोर्स एक्सपीरियंस की जाती है, एंड द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला. Understood? So what is magnetic field? What is magnetic effect of electric current? When current is passed through a conductor, that conductor starts behaving as a magnet. It produces magnetic field around that conductor, in which magnetic force can be experienced. Right? So how it produces the magnetic field? If we talk about the charge at rest, ठीक है, we have a Q charge which is at rest. It produces only electric field around it. ठीक है? अगर चार्ज रेस्ट में है, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी किया था कि अगर चार्ज रेस्ट में है, इट ओनली प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट. द फोर्स on the charge at rest in uniform electric field. अगर एक किसी चार्ज को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर दिया जाए, एंड विच इज एट रेस्ट, सो which force exert on it? Electrostatic force. If the charge is positive and placed in uniform electric field, so what is the magnitude of the force act on it? F is equals to plus QE. ठीक है? आप एक Q चार्ज को जो रेस्ट में है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर रहे हो, दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है? आप इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर रहे हो. What is the direction of electric field? Positive charge to the negative charge. ठीक है? तो जो चार्ज रेस्ट में है, you put that charge in the uniform electric field. So what is the force act on it? It's plus QE. We can simply say it QE.
देन वेयर डज इट मूव बेटा, क्योंकि फोर्स तो इस पे लग रही है, F इज टू क्यू ई, कैसे लग रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होता है, किसी न किसी चार्ज का होता है, तो ये सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। अपने टेस्ट चार्ज को जो रेस्ट में है, यू पुट दैट टेस्ट चार्ज इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दो आपके पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, है ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने पुट किया, इसका तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या करेंगे, दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, अंडरस्टूड। सो असर्शन रीजन में अगर ये रीजन आए कि व्हाई these two charges interact with each other, because there are two electric fields, दो एक जैसी चीजें होंगी वही तो इंटरेक्ट करेंगी, ठीक है, एक चार्ज है एक मास है, हाउ दे इंटरेक्ट, मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, अंडरस्टूड ना। सो यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, दे कैन इंटरेक्ट एंड एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, इट डिपेंड्स कि पोलैरिटी कैसी है ना, पोलैरिटी पे डिपेंड करेगा ना। सो F इक्वल्स टू क्यू ई, फोर्स एक्ट ऑन इट, वेयर इट मूव्स, अब फोर्स लग रही है इस पे क्यू ई, वेयर इट मूव्स बेटा, इट इज पॉजिटिव चार्ज, वेयर इट मूव्स टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, यानी कि इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, सेम डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इट मूव्स। The negative charge, if we talk about the negative charge placed in uniform electric field, negative charge अगर है, where it moves बेटा, where it moves, जतिन, where it moves, yes, in the opposite direction of electric field, क्योंकि what is the direction of electric field, positive to negative charge, but it is negative charge, तो ये कहाँ जाएगा, towards the positive, so in the opposite direction of electric field, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, ये तो था चार्जेस के बारे में, if the charge which is at rest placed in uniform electric field, if we talk about the moving charges, then moving charges, ठीक है, if the charge is in motion, देखो अगर चार्ज रेस्ट में था, it only produces electric field, what happen if the charge is in motion, it produces both the fields, ठीक है, so moving charge produces both the fields, this is very important, ठीक है, both the fields, electric field as well as the magnetic field, right, that means moving charges मतलब बेटा flow of charges per unit time is known as electric current, अगर किसी कंडक्टर में से चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम में पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। मूविंग चार्जेस का मतलब क्या है कि चार्ज मूव कर रहे हैं किसी कंडक्टर में से, दैट मींस करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग। सो जतिन, व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, दैट मींस चार्जेस आर मूविंग, सो मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर, ठीक है। तो या तो हम कह लें कि मूविंग चार्जेस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट करते हैं, या कह दें कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इट प्रोड्यूसेस बोथ द फील्ड्स, इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक, बट हियर वी ओनली टॉक अबाउट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो इट ऑल्सो हैव टू केसेस, अब मूविंग चार्ज है थ्रू अ कंडक्टर, मूव कर रहा है, इट हैज टू केसेस कि या तो वो मूव करे एक्सेलरेटेड मोशन में, या वो मूव करे इन अनएक्सेलरेटेड मोशन में। द चार्ज इज इन मोशन, इट क्रिएट बोथ द फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, बट मोशन में भी, if motion is accelerated, then what happen? If the motion is accelerated, what does it mean? That means it have some acceleration. When does the object or the charge have acceleration? Acceleration कब होती है?
when there is change in the velocity of that charged particle, velocity में change हो रहा है, velocity में change कितनी ways से हो सकता है जतिन? How many ways are there in which there is change in the velocity? How many ways are there in which there is change in the velocity of a charged particle? जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो एक चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है. When we will say that this electron has some acceleration, कब कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ acceleration है? When there is change in the velocity. So how many ways are there in which there is change in the velocity of that charged particle? 3 ways. Which are? There are 3 ways जिससे velocity में change हो सकता है. या तो सिर्फ उसके magnitude में change हो, कभी उसकी velocity ज्यादा है, कभी कम है, ठीक है? किसी force के against वो जा रहा है. कैसे जा रहा है force के against? If the charge is moving in opposite direction and there is opposite charge जो उसको attract कर रहा है, तो जब वो उधर जाएगा, its velocity decreases. Understood? तो velocity में 3 ways से change हो सकता है. सिर्फ magnitude में change हो, second सिर्फ direction में change हो. जैसे charge particle अगर uniform circular motion कर रहा है, तो uniform circular motion में its speed remains the same, but there is change in the velocity at every point. Understood? और third कौन सा हो सकता है? Change in both magnitude as well as direction. So there are 3 ways in which there is change in the velocity. और अगर velocity में किसी भी तरीके से, तीनों ways में से किसी भी तरीके से अगर velocity में change हो रहा है, that means there is some acceleration. क्योंकि acceleration क्या होती है? Rate of change of velocity. वो चाहे magnitude में change हो, चाहे direction में change हो, या दोनों में change हो simultaneously. Understood? So these are the 3 ways in which velocity of the charged particle changes. जैसे in the exam you have the question ना, MCQ, कि during when the charged particle enter perpendicularly, then it follow the circular path, maximum force exert on it, QVB, है ना, sin 90 degree पे. So which are the physical quantities which change or which remains constant? तो speed same रहती है, uniform circular motion वो particle करता है, speed same रहती है, that means kinetic energy same रहती है, but the direction at every point changes when it moves in a circular path. Direction change हो रही है ना at every point. Direction we represent tangentially. क्योंकि डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, दैट मीन्स इट इज एक्सेलरेटेड मोशन. सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज, व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बेटे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्चुअली एक्सेलरेटेड मोशन. देयर इज सम एक्सेलरेशन, वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है इफ द स्पीड इज यूनिफॉर्म. अंडरस्टूड? तो मैग्नीट्यूड इस केस में इक्वल रहेगा, सेम रहेगा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, इसलिए काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, बट ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट द वेलोसिटी इज वेरिएबल. दैट्स व्हाई, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है चाहे वो किसी तरीके से हो, सो वी कैन से इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन. सो ऑलवेज रिमेंबर, जो भी सर्कुलर मोशन होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दैट इज एक्सेलरेटेड मोशन. अर्थ का मोशन देखोगे अराउंड द सन, ये जितने भी प्लैनेट्स हैं, दे हैव यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एग्जैक्टली सेम टाइम पे अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेते हैं ना, 365.25 डेज में हर साल. तो दैट मीन्स स्पीड सेम है. अंडरस्टूड? बट देयर इज चेंज इन द वेलोसिटी, डायरेक्शन में चेंज आता है. तो देयर इज, वी कैन से दैट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन. इसका मतलब उसकी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है. सिमिलरली जो भी सैटेलाइट्स होते हैं, इंक्लूडिंग द नेचुरल सैटेलाइट दैट इज मून, उसका भी मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो जितनी भी गोल घूमने वाली चीजें हैं, they have acceleration, their motion is accelerated motion, and work done is, गोल घूमने वाली चीजों का वर्क डन कितना होगा? 0. जबकि फोर्स, जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है एंड जो उनकी वेलोसिटी है या डिस्प्लेसमेंट है, they have 90 डिग्री एंगल बिटवीन देम. तो वर्क डन इज इक्वल्स टू F डॉट S cos थीटा होता है, तो cos 90 डिग्री इज 0. दैट्स व्हाई देयर वर्क डन इज 0. एक क्वेश्चन भी था कि मूविंग चार्जेस डू नॉट हैव वर्क, या इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन था ना कि मूविंग चार्जेस डू नॉट वर्क. सो डू नॉट वर्क मतलब वर्क डन ऑन द मूविंग चार्जेस इज इक्वल्स टू 0. अंडरस्टूड? वी विल टॉक अबाउट दिस.
But come here now. So motion is accelerated. If the motion is accelerated, that means they have some acceleration. Their acceleration is not equals to 0. And when their acceleration is not equals to 0, when they have variable velocity, है ना, जब उनकी velocity में कुछ ना कुछ change हो रहा होगा, they have some acceleration. और जब उनकी acceleration हो रही होगी, then they produces electric field as well as magnetic field. Electric field को हम E से represent करते हैं, magnetic field को हम B से represent करते हैं. So electric field plus magnetic field plus they produce energy in the form of EM waves. So accelerated motion या oscillatory motion produces electromagnetic waves. This is also we studied in the EM waves, है ना? Second case, if the motion is unaccelerated, if the motion is unaccelerated, when will be there is no acceleration? Unaccelerated मतलब no acceleration is there. Acceleration 0 है. Acceleration 0 कब होती है? When the velocity of the particle remains constant. वो constant velocity के साथ move करे in the same direction. ना magnitude change हो रहा है, ना direction change हो रही है. Acceleration कितनी होगी? 0. या ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो भी एक्सेलरेशन 0 होती है, बट वो मूविंग है, इट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन, देयर इज नो चेंज इन द मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, देन एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0. इस केस में क्या होगा? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होंगे बट नो एनर्जी रेडिएट. ठीक है, नो एनर्जी रेडिएटेड. सो यू अंडरस्टूड कि हाउ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस? By the moving charges. ठीक है, so moving charges produce the magnetic field. Next we have rules to find the direction of magnetic field. कौन से rules? But you have to remember right hand thumb rule and second Fleming's लेफ्ट हैंड रूल. ठीक है, वैसे तो पाम रूल भी है, स्क्रू रूल भी है, बट यू हैव टू रिमेंबर दीज टू. ठीक है, दीज टू आर एनफ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. सो व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल? इफ यू होल्ड द कंडक्टर इन द राइट हैंड, ठीक है, if the current this thumb points in the direction of the current and these curled fingers are used to determine the direction of magnetic field. If the current in the conductor goes in upward direction, then the direction of the magnetic field lines is anti-clockwise, like this. ठीक है, if the current goes downwards, it shows the direction of magnetic field lines clockwise. ठीक है, so this is right hand thumb rule. Fleming's left hand rule. When we stretch our left hand like this, that thumb and the first two fingers are mutually perpendicular to each other, then thumb points in the direction of force or motion of the conductor, and this index finger or first finger points in the direction of magnetic field, and this middle finger points in the direction of current or velocity vector. ठीक है, thumb points in the direction of motion or force act on the moving charge. This finger magnetic field. ठीक है, and this middle finger points in the direction of the velocity vector or the direction of current. How you remember it? Father, mother, child. Current को हम क्या लिखते हैं? CU-R-R-E-N-T. तो फादर, मदर एंड चाइल्ड से आप इसको रिमेंबर कर सकते हो. ठीक है, दिस इज अ ट्रिक टू रिमेंबर द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फादर, मदर एंड चाइल्ड. फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट या वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द चार्ज पार्टिकल. नेक्स्ट वी हैव फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड.
अभी हमने देखा था कि फोर्स ऑन अ चार्ज एट रेस्ट प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कितनी फोर्स लग रही थी? एक चार्ज पार्टिकल जो रेस्ट में है, क्यू, अगर वो पॉजिटिव है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड की. नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इट मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. बट व्हाट हैपन इफ वी हैव अ मूविंग चार्ज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है. एंड इफ द चार्ज पार्टिकल मूव्स पैरेलल, देयर आर सेवरल केसेस, ठीक है, बट फोर्स क्या होगी? दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज Q, ठीक है. नेक्स्ट F, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V वेलोसिटी वेक्टर by which the charge particle is moving. जिस velocity के साथ वो मूव कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी. And that force is directly proportional to the magnitude of the magnetic field, ठीक है, and directly proportional to the sin theta. This is the theta between the velocity vector and the magnetic field, कि वो किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, by which angle, ठीक है. So when we combine these four equations, we have F is equals to Q VB sin theta. That means we can write in vector form. F is equals to Q V cross B, V vector cross B vector. ठीक है? So we can define this force as the cross product of velocity vector and the magnetic field along with the charge. तो QVB sin theta. Velocity vector magnetic field के साथ कितना एंगल बना रहा है, इस पे डिपेंड करेगी the amount of force. If the charge particle enter in a magnetic field parallel, ठीक है, ये Q है, इस magnetic field में यहाँ भी कहीं भी एंटर कर सकता है, it enters parallel. That means first case is when the charge particle enters in uniform magnetic field parallel, ठीक है. तो पैरेलली यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री पे चार्ज पार्टिकल एंटर करता है इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड में थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री. देन फोर्स इज इक्वल्स टू, व्हाट इज द फॉर्मूला? इट्स Q VB sin थीटा, sin 0 डिग्री, Q VB sin 0 डिग्री. sin 0 is equals to 0. So no force act on that charge particle. That means no force act on it by the B uniform magnetic field. So it goes straight. It goes, yeah, it moves straight as it is. जैसे वो जा रहा था वो ऐसे ही जाएगा in the straight line, ठीक है ना. कोई फोर्स इस पे नहीं लग रही, 0 force act on it, so it goes straight as it is. If the particle enters in the uniform magnetic field anti-parallel, then second case, if Q मूविंग चार्ज है 180 डिग्री, तो फोर्स इज इक्वल्स टू, व्हाट इज द फॉर्मूला? इट्स Q VB sin थीटा sin 180 डिग्री, ठीक है. सो F इज इक्वल्स टू sin at 0 डिग्री एंड 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 0. दैट्स व्हाई फोर्स इज इक्वल्स टू 0. सो नो फोर्स acts on it and it moves in a straight line. It moves in a straight line, ठीक है, as it is. जैसे ये मूव कर रहा था एंटी पैरेलल,
magnetic field in that direction, positive to negative, it enters in a anti-parallel, opposite direction of the uniform magnetic field. So we talk about that work done now. So work done is equals to F dot S, है ना, dot product of force and displacement. If the force is zero, then work done is also zero. So no work is done. In this case also, there is zero work done. You understood now why there is zero work done? Because force is zero. The magnitude of the force acting on that charged particle which enters parallel or anti-parallel along the magnetic field. That's why work done is equals to zero. Understood? That's why the question in that question, Ashish. Understood now? Why work done is equals to zero. So from this F is equals to QVB, here also we can define the magnetic field. यहाँ से हम magnetic field को define कर सकते हैं. So what is the value of magnetic field? Yeah, what is the formula to find the magnetic field? B is equals to F over QV sin theta. ठीक है? So from here we can define 1 Tesla. यहाँ से हम 1 Tesla define कर सकते हैं. How we can define 1 Tesla? If a 1 Newton force act on the 1 coulomb of charge which is moving, which is enters in the magnetic field perpendicularly, यानी कि sin 90 डिग्री हो जाएगा, 1 हो जाएगा. तो F over QV यानी कि 1 Newton force act on the 1 coulomb of charge when it moves with 1 meter per second and enters perpendicularly in the uniform magnetic field. That is 1 Tesla. You can define now. So we can define the magnetic field formula from here. Okay, and its unit. Understood? So this is a force. So these are two cases in which the charged particle enter parallel and anti-parallel. Okay, other cases we will discuss tomorrow.